Now, time for our upcoming session is an interesting discussion on new opportunities in OTT, the secret to succeed in the regional OTT ecosystem. In a country as large as India, there are large pockets of niche content viewers who can be monetized via OTT services. The road to reach, to acquire and monetize these niche audiences is what our next panel will enlighten us about. So to talk about this, we are joined by the leaders in this space. Would like to welcome Mr. Vibhu Agarwal, founder and CEO ULLU. Can we have you on stage, please? With a big round of applause. We have with us Falguni Shah, who is the Managing Director, EORTV. Can we have you, ma'am, on stage, please? Along with them, we have Mr. Soumya Mukherjee, Chief Operating Officer, Hoichoi. Please welcome, sir. We have Mr. Dilip Singh, who is the co-founder, Nuzr. Can we have you on stage, please? And we have Mr. Abhishek Jain, who is a filmmaker, founder, CineMan Productions Limited and Gujarati. Please welcome, sir. And to chair this session, we have Mr. Manish Manwani, who is the Director Sales, APAC and EMEA, ViewLift. Please welcome. So ladies and gentlemen, it's a great pleasure and an honor to be with such people who are leaders. ये इतने बड़े leaders हैं कि इस panel में शामिल होना मेरे लिए it's a big opportunity. So I think we can start with a quick introduction, self-introduction, and then we can take the discussion ahead. You already created some pressure, leader and all. So just to cut it really short, I'm a full-time filmmaker, part-time producer, distributor, and a struggling screenwriter, and now a learner and a seeker of OTT business. That's how I would like to introduce myself on this panel. Yeah, I'm Dilip Singh, and I'm co-founder of to be launched soon, Nuzr, News User. It's an OTT upcoming platform. And I have been into media, news media for over 30 years. So, and let's see how as a platform we deliver value. Hi, I'm Shomo. I head the business and strategy for Hoichoi. I've been working in this OTT industry for the last 5 years since Hoichoi's inception, and it's been one really thrilling ride, to be honest. Thank you. Hi, I'm Falguni Shah. I've been into production of content from last 10 years now. And now we've just launched a new OTT platform called EORTV. That's it. Thank you so much. नमस्कार, मैं विभू अग्रवाल, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ उल्लू डिजिटल. बाकी आप लोग तो जानते होंगे उल्लू के बारे में सब लोग. Thank you. Thank you guys for this introduction. So basically start में करना चाहूँगा. I'll keep it in Hindi and in English both. There were two inflection points in the OTT industry that happened in India. 2016 was a very important year when data became really cheap thanks to Jio. And then 2019 happened. 2019 happened or COVID 2019 happened? 2019 COVID, yeah. Because of that, OTT industry got a real good boost and a lot of players, came to the market. And regional is going big day by day. And along with that, we'll talk about niche content as well. So basically, my first question is to you, Abhishek. With new opportunities in the OTT market, right? A lot of big players like Amazon Prime, Netflix are also coming up with regional content. वो सब लोग भी regional content लेकर आ रहे हैं, dub भी कर रहे हैं content. तो क्या आपको लगता है कि वो एक challenge होने वाला है, competition होने वाला है? Well, I think these players were there already when we thought probably, or we were not even thinking of starting. But when they started entertaining, the regional players or the regional content and putting up there on their library, it sort of created an awareness also for us as makers or someone who would want to get into the business of OTT that yes, there is a market out there. So I don't see that as a challenge. Rather, I see that these bigger platforms are in a way indirectly marketing regional content, which also is having an effect on us, which is positively affecting us because they have a huge library and a multiple languages that they have to cater to.
So they are not going to have enough of content in that regional language, which we can cater to. And to put it very simply, क्योंकि आपने कहा हिंदी में भी बात करो, घर में एक बड़ा भाई भी होता है, एक छोटा भाई भी होता है. बड़ा भाई जो काम कर सकता है उतना ही कर सकता है, बट छोटा भाई जुगाड़ करके काफी सारे ज्यादा काम भी कर सकता है. तो देयर इज नो कंपटीशन एज सच, दोनों भाई साथ में ही चल रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके साथ एक और सवाल मन में ये भी आता है कि रीजनल OTT जो है, दैट क्रिएट कंटेंट इन स्मॉल बजट एज कंपेयर टू द बिगर प्लेयर्स, राइट? एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स प्लिथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटी for budding actors and content creators, right? Any thoughts on that, Abhishek? Oh, it certainly does. I and Soumya were briefly talking about, and while walking in, he just told me that we already had an ecosystem in Bengali, and the television channels were thriving. So you had to just, get them on board for OTT. Whereas specifically talking about Gujarati, there is no set ecosystem. One television GEC channel, and I don't know how much of it is really working. And the predominant audience basis for the theaters, that is the Natak. And films are also now just started for the multiplexes. That has just been 10 years. So we have another set of challenge, that is to create an ecosystem, work around with that, and bring that ecosystem adapted to the OTT. So, but having said that, in the 10 months of our existence on Oho Gujarati, I think we have had 9 debutant directors, 6 debutant writers, 34 debutant actors. Is all because we want more and more voices or stories to come on board. In fact, Oho Gujarati started with the proposition that it's apnu potanu. To translate it, it's apna khud ka. And we invited people to tell their stories. So we were flooded with emails, and these stories were coming from anywhere and everywhere. Even like a person who's sitting right here can write us an email, and that story, if we find exciting, we tell a story. Someone who's sitting in LA and working for an MNC can tell a story. So that's what we have been doing. So we were trying to create our own ecosystem. Wonderful, wonderful. Now then, we are talking about content. हम content की बात कर रहे हैं, तो apart from regional, niche content की भी बात हो जाए. What is niche content? जो सबसे अलग होता है, अलग market के लिए होता है, right? And I would like to throw some light on EORTV. Falguni Shah, if you like to, talk about your niche content. I know that LGBTQ community is a main part of it. Apart from that, there's a lot more to it. So if you can throw some light on that. Apart from LGBT community, we are targeting the careworn communities of the society as well. And we are telling up stories, regarding that, so that, people can accept those people as well. And we are actually, making stories which are positive, very progressive. Okay, we are not going to, past and, getting into novels or something like that. Something very progressive, having a detailed research, on the content. Sounds good. Content की बात हो गई, अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की. See, everybody, हम सब ने सुना होगा कि content is the king. क्या हमने ये सुना है कि technology is the queen? That's the new terminology that we believe in. And ViewLift is a technology provider, OTT streaming solutions. So we believe in this philosophy. And with that, my next question goes to Mr. Soumya Mukherjee. And I would like to inform everybody that you know about Hoichoi. It has set a bar very high in the regional content. So, Soumya, do you believe that technology is the new queen or the queen? Or maybe you think you can throw some light? What made Hoichoi as a success in the past 5 years? Talk a little bit about the journey. I think technology is definitely the backbone for any content company, right? We are not a content production house. We are essentially a platform. And to empower any platform, technology is definitely the biggest support that one can expect, right? Be it in through distribution or to making ease of payments, or even good content is not only enough. Even the experience that the person gets while watching that content is very, very critical, right? So as you know, I think in the last 5 years, we have worked with you guys in really building up the product from scratch, from introducing local payments to ensuring auto renewals, to making it marketing automation ready, to tracking data. Everything has been done from scratch. And I think it's been a very rewarding journey, to be honest, because without I think today we have not solved all the challenges in technology, but having said that, whatever we have done so far on the technology front
has really helped our content reach out to millions of people. So yeah. And to add to that, can you also throw some light on the best practices that you're using for user acquisition? Okay, see, now regional is going global. So is the global distribution also a key? And if we are talking about global distribution, like devices matter, like Roku, Apple TV, Samsung, the market is huge. So I'll throw in one quick data point that we have observed for Hoichoi, right? And I think in the last, so 2 years back, consumption on television devices, be it even Android TV or Apple TV, Fire TV, it was lesser than 10%. Today it's almost 46% if I'm not wrong. And there has been a significant growth in how user behavior has changed in the last 2 years. Definitely rapidly boosted by COVID, where a lot of digital penetration happened. And the other aspect towards user acquisition has been consistency and great content, right? Both go very hand in hand. At Hoichoi, we have been able to create a very strong formula where I think since inception, we have been able to release at least 2 new shows every month. So today we are sitting at a catalog of over 100 originals. That's pretty big for the entire Indian ecosystem in terms of content, right? And to add to that, we have new world premiere movies and blockbusters releasing almost once every month. So the right user acquisition strategy has to be not only content, but consistency as well. With that, we'll move to Dilip sir. Dilip sir, if you can, you're a veteran in the news domain, right? Past 30 years you spent in the news industry. So how technology is important? Because for regional players and for niche players, I think technology is the biggest problem. Also, you need a lot of investment if you're doing everything in-house. So with a great technology provider, how do you see? See, technology has always been the enabler. Most of us sitting here, those, especially those who have seen the late 80s and early 90s, there was, this VHS tape and played by the VCR and television you used to watch, movies. Later, the same thing was adopted to this, there were many video magazines, News Track, Eyewitness, many of the video magazines started. So technology was used not only for entertainment, but also for the news. So the way we used to consume news before, it changed completely. Similarly, the satellite television arrival. It started with a mix, content. Then you have a niche content. Suddenly you had, specific channel for news, then for cinema and so on. Then you had .com. Today we are sitting here, IndianTelevision.com. That .com brought a very different kind of habits in all of us. So technology has always been the biggest enabler for betterment, always. And this point of time when we are talking about OTT ecosystem, right now most of the speaker that I have heard since morning, largely we are talking about entertainment, movie. We have not, and largely a little bit on sports and some of the niche content. Vibhu Agarwal is here. We may differ on the quality of content or genre of content, but nevertheless, there was a taker. There was a people who were watching those content. That is how he's been largely, if you see the growth, and now he is from the niche to mainstream. He's also doing much work on that. So it's because of these technologies that we are able to get into a larger business ecosystem. The OTT technology, I especially believe that after talking to many players, which they have been put to use for streaming of movies. Now, sports already there, niche content already you have, spoken to Falguni, Shah, and other people have, Vibhu already spoke. But I think what the bigger opportunities lies in terms of news, information, and knowledge. Education is already, you see, this OTT platform technology is being used for education also. And now for news and information, we are also planning, we will be soon launching this. And that is where we see without the technology, we cannot imagine the greater changes, qualitative changes,
that can change the lives of the people. Today, I can just add one more line. You know, to the biggest problem, all of us sitting here in this room who consumes news, the biggest challenge is the fake news. Biggest challenge. And this fake news creating a lot of trouble, social, political, democratic, issues are coming up every day. And if you look at those, fake news problem, how do you address this? You can only do it by technology or human efforts. So now the technologies are available. We can use AI, ML, more recent technology to do, and plus combined with human intelligence, we can make fake news at least control, if not eliminate completely, at least we can control. We can provide an alternative to the people, to the news user, consumer. So there are a lot of opportunity. That's how I believe that technology is a great enabler. It can change the way we do business. It can change the way we consume our content and various genre of content. In short, you're making this world a more better place to live by avoiding that fake news. Now, with that, another big challenge that is there is the amazing content library. इतना सारा कंटेंट तैयार करना पड़ता है, तब जाकर आप सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू मिस्टर विभू सर. आप बताइए उल्लू की जर्नी के बारे में. हम सब जानते हैं उल्लू के बारे में, एंड नॉट ओनली कि सिर्फ एजी कंटेंट है, एजी कंटेंट तो खैर है ही, बट नाउ आप उसको पूरा ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं. आई बीन ट्राइंग टू सी द कंटेंट जर्नी ऑफ उल्लू फ्रॉम एजी टूवर्ड्स मेन स्ट्रीम. पेशावर एक शो था, तंदूर एक हिट शो था, एंड देयर आर मेनी मोर दैट आई सॉ ऑन योर प्लेटफॉर्म. So tell us about that. What are you trying to become? Another giant in India, please? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. उल्लू की शुरुआत सबको पता है कि हमने जो है वो एक एडल्ट कंटेंट से स्टार्ट ज़रूर करी थी, लेकिन हम अभी भी इसको चेंज नहीं कर रहे हैं. हमने पहले ये सोचा था और हम ये सोच करके कंटेंट को हमने चेंज करा, काफ़ी अभी भी कर रहे हैं. लेकिन उसके देखते हुए ये हुआ कि जो हमारे पास आज की तारीख में ऑडियंस है, हमारे पास जो व्यूअरशिप है, सब्सक्रिप्शन है, वो एक अलग उसका एक मार्केट है. तो उसको देखते हुए हम लोगों ने जब स्टार्ट लिया था तो मेरे सबसे पहले जहन में ये चीज़ आई कि व्हाट्स न्यू, नया क्या है. जितने भी और OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज़्यादातर वही एक कंटेंट बना रहे हैं, या तो सस्पेंस है या थ्रिलर है, और वो मिक्स एंड मैच दे रहे हैं. तो ऐसा कोई एज ए बिजनेसमैन, जो एज ए फाउंडर ऑफ द कंपनी, मेरा जो इन्वेस्टमेंट आया वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आया कि हमें कुछ अलग लाना चाहिए जो जगह खाली है. और ये कोई गलत चीज़ नहीं है. अगर मैं बना रहा हूँ, हम लोग बना रहे हैं, तो लोग देख भी रहे हैं. और ये प्रूव भी हो चुका है कि उल्लू की सब्सक्रिप्शन और व्यूअरशिप जो भी है, काफ़ी लोगों को पता है इन टर्म ऑफ गूगल पे जा कर के भी, और हमने बताया भी है. तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको चेंज कर रहे हैं, वो अपनी जगह रहेगा. हमने इसको ज़रूर एक बुफे की तरह रखा है, जिसके अंदर हम लोग कुछ हॉरर शोज़ हैं और सस्पेंस है, थ्रिलर है, विद गुड एक्टर्स के साथ हम लोग इसको लेकर के आ रहे हैं. और हमने बनाए भी हैं, जैसे अभी आपने बताया कि तंदूर है, पेशावर है, साइनाइड है, अभी और भी हमारे कई शोज़ आ रहे हैं. तो वो हम लोग कंटिन्यूसली उसमें बना रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं. कंटेंट ज़रूर हम लोग, जो अभी आपने कहा कि लाइब्रेरी, ऑफ कोर्स हम लोग वीकली 2 जो है न्यू कंटेंट रिलीज़ करते हैं. और ये बहुत ज़रूरी है एक व्यूअर को उसको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ देते रहना, क्योंकि अगर वो आपको एक बार पैसा देता है तो वो आशा करता है आपसे कि आप कुछ ना कुछ उसको हफ्ते में 2 बार 3 बार दिखाते रहें. जो प्रैक्टिस थी, आई थिंक आफ्टर दिस कोविड, ये बढ़ी है बड़े प्लेटफॉर्म्स की. और उन लोगों ने जो 3 महीने में कंटेंट देते थे, वो भी कंटेंट वो 15 दिन में, 25 दिन में देने लग गए हैं. और ये स्पीड बढ़ती जा रही है. अभी जिस तरह मार्केट में मैं क्योंकि बैठा हुआ हूँ, लोग अभी पहले सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 कर रहे थे, अभी सीज़न 1, सीज़न 2 से भी कम आ गया है.
वो केवल 8 एपिसोड पे कंस्ट्रेन हो गया है, लेकिन ये वापस आ रहा है जो कि बढ़ेगा। तो अभी जो हमारी लाइब्रेरी है वो उसमें नहीं है कि हम कोई मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, वो क्योंकि हमें रिलीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। हम हफ्ते में 2 करते हैं, अभी हमारे प्लान है हफ्ते में 3 देने का। अभी एक हम दूसरा OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को, कुछ लोगों को, काफ़ी लोगों को पता होगा कि हम GC में आ रहे हैं, तो उसका लाइव एंड कैचअप भी ला रहे हैं। तो वो एक कंटेंट हम लोग एक सेपरेट बना रहे हैं जो GC से रिलेटेड है। और ये जो GC होगा, अगेन मैं आपको बता दूं, जैसे सास भी कभी बहू टाइप का जो है, ये GC नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे बोला कि एज ए बिजनेसमैन कौन सी स्पेस खाली है और क्या लोग देखना पसंद करते हैं। तो ये GC जो हम ला रहे हैं, ये थोड़ा सा हम अलग ला रहे हैं। लोगों को इसमें कुछ क्विक चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि आज के तारीख में कंटेंट बड़े होने से बेहतर है कंटेंट क्वालिटी होना चाहिए। डे बाय डे हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह से भी हट करके हम लोग उस पर चले जाते हैं, अपना रील्स वगैरह पे। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। तो दिस इज़ व्हाट। थैंक यू विभू सर, आई थिंक बहुत अच्छा एनलाइटमेंट था कि भाई जो मैं सोच रहा था वैसा नहीं है, वी आर स्टेइंग वेयर वी आर, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था भाई कि रीजनल कैटेगरी जो है वो कैसे सेगमेंटेड हुई है। सो बेसिकली कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो रीजनल कंटेंट सर्व कर रहे हैं, लाइक अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, राइट। देन देर आर लोकल प्लेयर्स लाइक वूट, Z5, and then we have core regional players like Oho Gujarati, Hoichoi, Planet Marathi, and apart from that we have regional content aggregators like Tata Sky, Watcho. So Soumya, how do you see this turning up? क्या फ्यूचर में हम भी एग्रीगेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं? क्या फ्यूचर एग्रीगेशन मॉडल पे जाने वाला है? Is aggregation going to be key for Hoichoi? See, I think there's no right or wrong answer to this, to be honest. This is a very dynamic system. Literally what we were doing one year back, the strategy has completely changed today. So very difficult to predict the future, but yeah, it is heading towards almost an aggregation model where, let's say, maybe few top 3-4 aggregators would completely dominate the market. But at the same time, having said that, we are at a certain space where the catch-up time to, let's say, starting to create content in the Bangla ecosystem is almost a 3 to 4 year journey with a lot of cash. So luckily we are fortunate enough to be at a certain space where it's very difficult for any competitor to adapt. And even if the world goes towards aggregation, I think we will definitely be part of that, but we will still have our own identity. That's good because your marketing is attracting a lot of other aggregators also. They're trying to approach you for aggregation. And to add to that, what marketing vehicles are actually working for you? And if you can list down certain things, because Hoichoi is actually a case study for the regional industry. May it be like Oho Gujarati or maybe some other company which is growing. They see Hoichoi as a case study and want to approach their business very similar to that. So if you can add something to that. I think from day one, the core thought was always to entertain people in their own language. And we believed in consistency. What we did from the get-go, we wanted to provide very premium content, but wanted to maintain a discipline around that, right? So we merged our films team and television team so that the quality of movies and the discipline of television got maintained. And we were literally able to churn shows in, let's say, a gestation period of 3 months. From production to release. I think that is how we have been able to release 25, 30 very premium shows year on year. And I think that has been the secret sauce behind Hoichoi's growth, right? Because whatever we earn, we invest that back into content. I think content is almost 60% of the P&L. We rarely spend on advertising. What we do very well is we have been able to build a very local brand, which speaks the language of the people. And has almost become a voice of the people in the markets we are currently present. So if somebody is sitting in US and if they want to consume content in their own language, they have to come to Hoichoi because the entire library for the past 5 decades is on Hoichoi, right? So we have been able to build a brand, and that brand has been accelerated through the distribution as well as the content that we have been able to build on top of that. Sounds good. And apart from that, एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था अभिषेक से भूल गया. Last year एक शो आया था, उसका नाम था विट्ठल तेड़ी, राइट?
उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं, बिकॉज उसने इतना मार्केटिंग हलचल मचाई, एंड आई थिंक प्रतीक गांधी उसमें थे, तो इफ यू कैन टॉक अबाउट दैट. So that was Vittal TD was our launch show of OHO. Last year in May we released that show, and since Pratik Gandhi became a sensation after Scam 92, and we go long back. So we, I mean, that was his first release after Scam 92. So there was already a buzz around what is he doing after Scam 92, and we had this show, and we thought that it could be the perfect vehicle for us to launch our platform, and it did really well for us. It's still the most viewed or consumed content on the platform, and it has got a following or a great fan base. So we continue to keep on going with that. Apart from, obviously, there are other shows that we are creating as an IP for ourselves. And then there is another thing which we are hearing a lot, and which is literary revival. Literature तो जैसे हमारी content से खत्म ही हो गया था बिल्कुल, right? अब regional content के market में आने से literature को काफ़ी ज़्यादा promotion मिल रहा है, चाहे वो classic novels हों और maybe some content piece. अगर एक किताब already ready है किसी की, which is a great content, so I think सिर्फ उसका screenplay ready होना है, and shooting can start हो सकती है. So how do you see that, the literary revival of? So from our personal experience, मुझे ये पता लगा है कि ये दिखता बाहर से बहुत easy है कि यार एक तैयार नॉवेल ले उठा लो, स्क्रीन प्ले में अडेप्ट कर लो और उसको प्रोड्यूस कर लो, आपका जेस्टेशन पीरियड एकदम छोटा हो जाएगा. लेकिन वो ऐसा होता नहीं है. गुजरात, बंगाल, दे हैव ग्रेट लिटरेचर, ऑल्सो लॉट ऑफ अदर लैंग्वेजेस. Gujarati literature is also very rooted, deep, rich. But when we go out there practically in the market, first of all, the practical problem is that you have to first find who was the original, right? I'm talking about classics specifically. और वो जो right free नहीं है या royalty free नहीं है, तो किसने लिखी है वो ढूंढो. उसके बाद उसके multiple publishers हैं. और अगर वो खुदा ना खास्ता वो इंसान अगर गुजर गया है, तो उसके मल्टीपल बच्चे जो राइट पार्टीशन में होल्ड करते हैं, तो कितनों के साथ में आप डील करोगे. और सबकी अपेक्षाएं ऐसी हैं कि आप सीरीज बनाने जा रहे हो, मतलब एक ही बार में पूरा ताजमहल खरीद लेना उन्हें. So that is practically not possible. We have tried. When we started, we were, boasting a lot that we will go and adapt literature. We'll go and adapt literature. When we went out, we started talking to these publishers, or we started talking to these right holders. We realized that यार ये तो मतलब एक इतना बड़ा गैप है. आप ब्रिज के उस तरफ है, हम ब्रिज के इस तरफ है. हम दोनों को क्रॉस करना है, लेकिन कोई आगे हटने को तैयार नहीं है, कोई आगे चलने को तैयार नहीं है. ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. जहां तक बात आती है कंटेम्प्रेरी लिटरेचर की, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो लिखा ही इसलिए जाता है कि कोई इसे अडेप्ट कर ले. अब उस माइंडसेट से आप ना उस लिटरेचर या लिटरेरी वर्क के साथ में जस्टिस कर रहे हैं, ना आप, मतलब इट्स इन्फिल्ट्रेशन, लाइक इट्स नॉट प्योर. सो अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब वो सामने से अगर कहीं से गिर के आ जाएगा तो हम अडेप्ट कर लेंगे, हम खा लेंगे. द लॉन्ग हैंगिंग फ्रूट विल बी गुड. बट ओके, दिलीप सर, आपको कुछ थॉट्स ऑन लिटरेरी? बेसिकली लिटरेचर बहुत पुराना रहा है इतिहास के. अब इंडिया में रामायण है, महाभारत है, बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो एनिमेशन में भी बनता है. क्या न्यूज़ में कुछ इसका कोई जगह है? न्यूज़ में आप देखिए, ऑलरेडी टेलीविज़न पे चाणक्य से लेके और कई सारे शोज, संविधान का जो निर्माण हुआ, जो हिस्ट्री में से, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में से, उसका पूरा है. अंबेडकर साहब है, गांधी है, दे ऑल आर सब्जेक्ट. देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ न्यूज़ टेलिंग द ट्रूथ about the certain conditions which India has gone through. I don't think enough a story has been told. Look at a very, I don't want to get into a controversy, Kashmir file. Whatever, when I'm politics apart, I do not want to comment whether it is factually correct or not, but look at the buzz it has created. In fact, many people are criticizing it because of it claims that it is based on facts. So in terms of news, India and Indians are yet to hear the real stories. And that is where the great potential we have. It's a very unique country. I think, 800 million people, 80 crore लोगों को सरकार 2 वक्त की, जब से कोविड started, government has been feeding 80 crore, 800 million. On the side, we have 900 million plus internet users. We have 750 smartphone users, smart TV users. And then you have your technology. So, the potential and opportunity, I'm just underlining the potential and opportunity, what it can do.
not enough has been told. There enough to be told. I don't think the generation today who are glued to the mobile, the millennials, who we call them, they have not been told the facts. They are watching most of the fiction, Mirzapur. अब मिर्जापुर देख के इस तरह से होता तो है नहीं कहीं पे भी. I come from the same reason. I haven't seen that every second word is abuse. It doesn't happen like that. But nevertheless, it's a super hit series, and second or third, whatever season may happen. So there is a need to tell the facts also. And it's a misnomer to believe that news people don't pay for. I'll tell you two great examples. Discovery Plus. Their revenue in India has been growing. Number one. Number two, Bloomberg Terminal. All of us know. They charge 24,000 per year, dollar, not rupees, for the financial data they provide. So use of technology and opportunity of OTT technology and to provide the real-time data, real-time news, facts, information, based content also has a huge potential, which is not yet. Nobody is that, and I think we will be the first one to launch. The Nuzr would be the first one for the users of both sides. One is the creator network, another is the consumer also, and also the empower the citizen. All of us, I don't know people who are sitting in this room, many of us face someday some problem which we want that thing to be reported. But you have no access to media. So what do? Most of time we go to Facebook or YouTube and create our video and give. But the news media platform which OTT technology can power. So there's a lot of potential, empowerment, citizen service, business opportunity, everything is there. So I think the fact-based and news-based story is much bigger than, and if not much bigger, then definitely as big as the other genres are. Well, that's an interesting take on that. We were talking about devices, Soumya. So as a global strategy for Hoichoi, क्या है सोच के भाई रोको की तरफ हम जाने वाले हैं या ऑलरेडी कितनी डिवाइसेस प्लान हैं? क्या मार्केट के हिसाब से भी डिवाइस प्लान करनी पड़ती है? इस रीजन में ये मार्केट अच्छी, ये डिवाइस अच्छा चल रहा है, लाइक यूरोप में, यूएस में, एप्पल टीवी और रोको. Any thoughts on that? I think, yeah, absolutely. It has to be very linked to the kind of market you're operating in, right? So when MITV started, we were on MITV. When Fire TV took prominence, we were on Fire TV. Now we are going to be on Google TV. We are also on Roku because US is a very important market for us, right? But having said that, there are a lot of key pockets in Europe where Hoichoi still needs to grow. And once that happens, then that strategy from a device standpoint would need to be adapted. What is more key is unlocking certain markets in terms of distribution, primarily, let's say, local payments, or partnering with telecom to provide ease of payments. So that is something we have been following more from a market expansion strategy rather than just focusing it on devices. So what do you suggest to somebody who is looking for technology? I want a technology partner. So what do you think is a couple of things that make your OTT a success? Definitely scalability, and I think the OTT partner has to be open to adapt to the local market. Because if you're running a subscription-based OTT platform, without ease of payments and without the option to have multiple payments, that too in the local currency, I think it's very difficult to succeed. So first of all, OTT, the technology partner has to be very flexible, and it has to be scalable, because once you hit the millions of numbers, it cannot crash. That's correct. That was a fun take. And apart from that, yes, Falguni, some more thoughts on the international. Since your platform, you told us that is more focused on the international content, not just the Indian. India is still adapting to such niche content. So how are you focusing on the international part? What content are in the lineup? And the same question, are you doing also some literature content, or it's all fiction? So what I have researched is I have a lot of international clients coming onto my platform, and they even watch Hindi content, not even understanding what is happening in Hindi. They just go and just see the emotions, what is happening, and they are actually very happy. We give subtitles as well over there, but still getting English dubbed
Okay, the content was very important for us because we did not want people to just, watch the subtitles and, see what is happening on the screen. There is some, when you are, with the audience, when audience is watching, they want to see everything together. So yes, we are more focused on, English content as well. It's not that we are not on regional content. We have originals regional content in Marathi, which have great stars like Shreyas Tarpade, Rakesh Bapat and all. Okay, apart from that, we have Gujarati also. Our contents are also getting in Gujarati as well, wherein I understand that I am a Gujarati, and I know my people who are beyond Surat and all, they don't understand the level of Hindi also. So yes, we are also getting into regional content as well as international both together. विभू सर, आपके लिए अभी इंडिया तो आपने कैप्चर कर लिया है, ये मैं सोच रहा हूँ, अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्लान्स हैं? यहाँ डिवाइसेस का भी सवाल बता दीजिएगा कि आप और कौन कौन सी डिवाइसेस पे अपनी ऐप को ले जाना चाहते हैं? इंटरनेशनल में ऑलरेडी हम लोग हैं इस वक्त। जैसा अभी फाल्गुनी जी ने कहा और सौम्या जी ने भी बोला ये चीज़ कि इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि ऐप है, OTT है, आप जब उसको रिलीज़ करते हैं तो वो इंटरनेट के थ्रू हर जगह जगह पहुंच जाता है। आप ब्लॉक करना चाहें बात अलग है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर हमारा कंटेंट जो होता है वो इंडियंस ही देखते हैं और वही पसंद करते हैं, क्योंकि भारतवर्ष के काफ़ी जनता जो है वो इंडिया के बाहर लोगों ने अपना ज़रूर रिजाइड कर रहे हैं वहाँ पर, और तो उनको हिंदी कंटेंट से वो कनेक्ट हो पाते हैं। भले हम उसको इंग्लिश में डब कर दें, क्योंकि वो उनकी भाषा ही इंग्लिश हो जाती है, भले वो इंडियन हो, लेकिन वो इंडियन ब्राउन स्किन को देखना पसंद करते हैं। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है, जैसे इंडिया में पेटीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा हम लोग के उसमें आ जाता है, वो इजी वे होता है UPI, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे पेमेंट गेटवेज को हर जगह एक्टिव किया जाए। अब रही बात इस बात की कि वहाँ पर इसी वजह से जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम रहता है। मतलब अगर मान लीजिए इंडिया में 95% है तो केवल 5% ही हमको पब्लिक मिल पाती है। मेरी जो व्यूअरशिप है या सब्सक्रिप्शन है वो इंडिया के बाहर भी काफ़ी है, लोग देखते हैं उसको। काफ़ी चीज़ लोगों का डिमांड भी आती है पेमेंट गेटवे वगैरह को लेकर के, या उनके जो डिवाइसेस हैं, जैसे वहाँ पर roku एक चलता है, क्योंकि US और UK में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंटरनेट फ़ोन पे बहुत महंगा है। तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे यहाँ फायर TV है, वहाँ भी है, बट roku वहाँ पर ज़्यादा चलता है, और इसी तरीके के कई डिवाइसेस हैं। तो हम लोग उस पर भी प्लान करते हैं वहाँ देने के लिए, लेकिन सेम वही प्रॉब्लम आती है लोकल पेमेंट वे गेटवे, क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड OTT होता है। तो उसके लिए हमें या तो लोकल हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो लोकल वहाँ की एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू हम लोग उनके उसमें जाए और उससे लोग देख सकें। तो ये एक डिवाइसेस का प्रॉब्लम जो भी नहीं आ रही हैं वो उसमें हम लोग ज़रूर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी कंटेंट इंटरनेशनल का जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि पेमेंट गेटवेज वगैरह को ही लेकर। ओके एंड एनी थॉट्स ऑन कोई ऐसा टेक्नोलॉजी चैलेंज है जो आप फेस कर रहे हैं अपने स्ट्रीमिंग में? कुछ ऐसा है आपके दिमाग में? नहीं, टेक्नोलॉजी में एज सच नहीं है, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी डे बाय डे हर 3 महीने में 2 महीने में आपका जैसे फ़ोन अपडेट होता है, वैसे ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम आती रहती है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप जब पब्लिक में अपना कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो पब्लिक आपको खुद गाइड करती है कि यहाँ पॉज बटन होना चाहिए, ये पॉपअप होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। तो हमारी एक प्रॉपर टीम उसके अंदर बैठ करके उसको निकालती है जो परसेंटेज ज़्यादा होता है, और उस पर हम लोग रिसर्च करके उसको हम लोग दोबारा मतलब उसको क्रिएट करते हैं और उसको अपलोड करके उसको अपडेट के लिए बोलते हैं। तो वो ऐसा सच नहीं आता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, शायद इससे पहले आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि टेक्नोलॉजी इज़ द क्वीन। तो जैसे एक सफल इंसान के लिए एक औरत का हाथ होना बहुत ज़रूरी होती है। तालियां हो जाए इस पर। तो वैसे आपके कंटेंट को दिखाने के लिए वो एक क्वीन जो है किंग को किंग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपका ऐप, क्योंकि मेरे कई साथियों ने ऐप खोला,
मैं सबके ऐप को डाउनलोड करता हूँ, ये मेरी आदत है और मैं उसको ज़रूर देखता हूँ। उसका ये भी वो कह सकते हैं क्योंकि मैं इस बिज़नेस में हूँ इसलिए भी, लेकिन 80% लोग टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं देते हैं और वो सबसे बड़ी हार है और वो ही सबसे बड़ी जीत है। तो टेक्नोलॉजी जो आपने ऐप बनाया है, एक तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए क्योंकि इंडियंस पढ़ता नहीं है, आपका कोई भी पॉपअप आता है ना उसको पढ़ता नहीं है, वो फटाक से बटन दबा देता है, ओके। तो आपको उस पर बहुत लोगों को ध्यान देना चाहिए और यूज़र फ्रेंडली के साथ साथ आपका हर बटन वर्क करना चाहिए, इसकी एक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं you for खाली that. एक हाँ, बात सर। कहना चाहूँगा कि वो जो किंग बनाने वाली बात है ना, क्वीन का, उसमें जब दिक्कत एक है, जो टेक्नोलॉजी कंपनी है ये किंग कंटेंट वाले को बनने ही नहीं देना चाहते हैं। इनका जो प्राइसिंग मॉडल है, जब तक वो एफोर्डेबल नहीं बनाएंगे, जब तक वो ट्रांसपेरेंसी नहीं, बिकॉज इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी. So the one of the very important point that I would like to tell the technology, the providers, that please make it transparent and affordable. वंडरफुल. सो बेसिकली इसके साथ मैं थोड़ी सी मार्केटिंग पिच भी दे देता हूँ यहाँ पे. एनीबडी हु इज प्लानिंग टू लॉन्च देयर ओन ओटीटी प्लेटफॉर्म, चाहे वेब सीरीज, मूवीज, मे बी स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग हो या न्यूज कंटेंट हो और एनी नीश कंटेंट या रीजनल, सो व्यूलिफ्ट इज देयर टू असिस्ट यू एंड बी योर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर. सो दैट्स माय पिच गाइस. एंड कुछ आखिरी के 2 सवाल और हैं जो मैं चाहता हूँ, मैंने सबसे लास्ट में रखे थे. एक सवाल है कि कोई भी सिनेमा हो, एक सवाल हमेशा उठता ही है कोविड-19 के बाद, थिएटर्स वर्सेस ओटीटी. मेरा मानना पर्सनली ये है कि थिएटर्स डेफिनेटली विल को एग्जिस्ट विद ओटीटी, बट आई वांट टू नो सबका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. स्टार्टिंग विद यू अभिषेक. My training has been in for cinema, so theaters are not going anywhere. और ये गलत धारणा है लोगों की कि अच्छा अभी ओटीटी के आने से थिएटर्स बंद हो जाएंगे. रादर इसको इस तरह से देखना चाहिए कि एक और स्ट्रीम बढ़ गया कहानियाँ कहने का, फ्रॉम अ कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ आई हैव अ चॉइस ऑफ माई कन्वीनियंस. मुझे ये फिल्म सिनेमा में जाके देखनी है या ये फिल्म मुझे ओटीटी पे देखनी है, घर बैठ के देखनी है, तो उसके लिए उसकी डेमोक्रेसी बढ़ गई है. So I think these are going to, I mean, these two platforms, and there should be more such streams, and they will all coexist. I share his views. It will complement and supplement, and you have more choice. Choice is never, always. If you have a choice, it's always better. So I don't think it's going to threaten anything further because we have been hearing this whenever the new technologies come. जैसे अब तो टेलीविजन खत्म हो जाएगा, ओटीटी आ जाएगा, ये कभी हुआ नहीं है. अभी भी टेलीविजन चल रहा है. और आपको मैं बता दूं, लास्ट ईयर इन रूरल टू टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में देयर वर 42% जंप इन द सेल ऑफ टेलीविजन सेट्स. सो टेलीविजन कहीं नहीं गया, ओटीटी, स्मार्ट टीवी बन रहे हैं. सो देयर इज ऑलवेज इट कॉम्प्लीमेंट्स, इट डजंट थ्रेटन. सो दैट इज व्हाट आई बिलीव, दैट इट्स नॉट गोइंग टू harm, rather it's going to complement and help. So our parent company is into movie production. I know that. SVF. SVF, I think market leaders for the last 25 years. So this is an internal office debate. Theaters versus OTT. But every time I go to SVF to do a movie acquisition deal, I think I want the movie to release in theaters because it creates much bigger perception than a direct to OTT release. And automatically on day one, the movie has been marketed. So that's why I think theaters are very key to OTT success. Even I feel that theaters cannot go anywhere because the viewership, the effects, the sound, the visualization, which we see on theaters, we cannot get it onto our mobile devices or our TV devices. So both of them has to exist. Only the OTT platform has added a lot of content wherein when you are free, wherever you have, whatever you want to watch, anytime you can watch. So this is an added advantage for the OTT platform. करेक्ट है. ये कोविड टाइम में ज़रूर ये हुआ था कि थिएटर्स बंद हो गए थे जिसके कारण लोग घरों पे देखना पसंद करते थे. वो एक मजबूरी कह लीजिए. लेकिन आज भी जितनी भी मूवीज़ थिएटर पे आती हैं, रिलीज़ होती हैं, ऑफ कोर्स फाल्गुनी जी जैसे कहा, जो उसका एक आपको साउंड इफ़ेक्ट मिलता है, जो एक एम्बियंस मिलता है, वो देखना 70 mm के पर्दे पर, आप कितना बड़ा टीवी भी ले लीजिए, प्रोजेक्टर पे भी देख लीजिए, घर पे वो आपको नहीं मिलता. तो ये ज़रूर मैं मानूंगा. और आज की तारीख में जितने भी OTT में हम लोग कंटेंट डालते हैं उसमें
ज़्यादातर कंटेंट लोग फ़ोन पे छोटा कंटेंट फॉर अ टाइम बिंग ज़रूर देख लेंगे, बट कंटेंट वो टीवी पे ही देखना पसंद करते हैं। तो वो एक बड़ी स्क्रीन पे देखना, वहाँ पर जो कंटेंट हम लोग, क्योंकि जब ओटीटी स्टार्ट हुआ था तो उसका जो टारगेट ऑडियंस थी वो लोगों की थी मोबाइल और बहुत बहुत लैपटॉप, लेकिन वो कन्वर्ट होती गई क्योंकि बड़ी पिक्चरें हैं, 3 घंटे 4 घंटे की जो वेब सीरीज़ बनती हैं वो लोग टीवी पे ही देखना पसंद करते हैं। तो वैसे ही अगर कन्वर्ट करके अगर आप मूवीज़ देखें तो थिएटर्स का एक अलग ही लुक एंड फील है। तो कोई भी मार्केट मुझे नहीं लगता है कि इधर से उधर या उधर से इधर होगा। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ लोगों का जो टाइम फ्रेम होता है वो सेट होता है कि भाई हम नहीं जा पा रहे, हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमने टीवी पे देख लिया, या जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उन्होंने मोबाइल पे अपना स्टैंड लगा के देख लिया। बट वो ग्रेजुअली और धीरे धीरे कि आज 2 एपिसोड देख लिए, फिर 1 एपिसोड देख लिया। बट एक वन गो में देखने के लिए एक ये होता है ना, एक साइकोलॉजिकली फिट होता है कि हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो 3 घंटे मोबाइल हम साइलेंट कर देते हैं और उसके बाद आराम से देखते हैं। वो घर पे पॉसिबल नहीं हो पाता और मोबाइल पे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तमाम आपके मैसेजेस और सब कुछ पॉपअप होता है तो आप उससे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो दोनों का अपना अलग अलग मार्केट है। कुछ पब्लिक ज़रूर पॉपअप हुई है, लेकिन इधर से उधर दैट इज़ वेरी लेस, बहुत ही कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी का मार्केट खा रहा है, सबका अपना अपना मार्केट है, अपनी अपनी ऑडियंस है, अपनी अपनी पब्लिक है। मतलब हम सब एक साथ हैं। And thank God, cinemas do not have skip intro and 2x option. That's great. So that brings to my last question, and then we'll open the round for a Q&A session. एक डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल का एक कोई बिल आया था लास्ट ईयर, सो यू कैन चूज नॉट टू आंसर और आंसर, इट्स अप टू यू गाइज। सो ऐसा होता है क्या कि अगर कोई ऐसा रूल इंट्रोड्यूस हो रहा है आईटी का, सो दैट इज कमिंग इन वे ऑफ आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच टू शो व्हाट कंटेंट वी वांट टू, बिकॉज आई थिंक सबसे पहले अगर उसका असर पड़ेगा तो वो आई थिंक एजी कंटेंट पर पड़ेगा। सो इफ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम विभू सर, यू। ये जो आया था ये 24 फरवरी 2021 में आया था। ये गज़ट बाद में पास हुआ था। मेरी मिनिस्ट्री में अक्सर बातचीत होती रहती है और अभी लेटेस्ट मैंने करी थी, तो बहुत ही जो हमारी एमआईबी और हमारे जो मिनिस्टर हैं वो बहुत ही ओपन माइंडेड हैं। उन्होंने बहुत ही ओटीटी को ओपन माइंडेड देखा हुआ है। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने जो यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने जो गज़ट पास हुआ है उसको पूरी तरह पढ़ा है। अगर उसको आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहीं भी किसी भी प्रकार के कंटेंट को लेकर इन ओटीटी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं उन्होंने कही है कि आप ये चीज़ दिखा नहीं सकते या ये चीज़ को ऐसा आपको करना है। उन्होंने एक चीज़ का उसके साथ अटैचमेंट दिया है कि अगर ये चीज़ है तो इसका ये पॉपअप आएगा, आपको ये दिखाने से पहले आपको ये चीज़ बतानी ज़रूरी है इन टर्म ऑफ डिस्क्लेमर। क्योंकि मैंने जैसा बताया हिंदुस्तान की जनसंख्या काफ़ी लोग नहीं पढ़ते हैं, डिस्क्लेमर्स इग्नोर करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो उसके लिए उन्होंने चीज़ों को मेंशन करने के लिए बोला है कि आप बहुत बोल्डली इसको 4 लाइनों में 4 शब्दों में मेंशन करें। तो कंटेंट को लेकर के उन्होंने कोई भी चीज़, क्योंकि ओटीटी जीसी या टीवी से थोड़ा सा अलग उन्होंने किया है और सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड उन्होंने बनाया है। सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड के अंदर उन्होंने हमें वो चीज़ की एक तरीके की पावर ज़रूर दी है, लेकिन उसके अंदर कई रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाए हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे आप उसकी एसएनपी करेंगे और इस लेवल पे इसकी आप वेटिंग कराएंगे, थर्ड पार्टी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। तो वो सारी चीज़ें करके ओटीटी को जो उसके टर्म्स हैं, जो उसके रूल्स हैं, उस हिसाब से हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं। सभी लोग उसमें यहाँ पर जो ओटीटी हैं या जो और भी हमारे साथी लोग हैं, और काफ़ी लोग उसके मेंबर्स भी हैं जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड होता है। दैट इज़ IAMI, आई थिंक ना, IAMI। सो IAMI जो है वो हमारी एसोसिएशन है जिसमें मैं भी उसमें मेंबर हूँ, और हम ही लोग में ही मिस्टर करण जी हैं और मिस्टर गांधी जी हैं, वो लोग उसको शायद लीड कर रहे हैं। आई थिंक एकता जी भी उसको देख रही हैं। तो वो लोग सब लीड कर रहे हैं, क्योंकि एक इंटरनल इलेक्शन होता है। जैसे आप लोग फिल्म इंडस्ट्री के हैं, काफ़ी लोग जो यहाँ बैठे होंगे, जैसे आपका इम्पा है या और भी जो इस तरीके का है, तो एक उसकी एक सेपरेट ओटीटी की एक एसोसिएशन बनाई गई है
और हमारी चीज़ों को ले जा करके हमारी कुछ दिक्कतें होती हैं या हमें अगर कुछ, तो वो भी चीज़ वहाँ इंट्रोड्यूस होती है. तो दिस इज़ व्हाट अभी तक जो चल रहा है वो अभी Wonderful, wonderful. I think that gives the opportunity for everybody to, come up with creative content. And any closing comments, Soumya? I think on this particular thought, see, I think definitely everybody is compliant today. Completely agree with him. The law does not say that you can't show this or you cannot do that. It's in fact very fair. It just asks platforms to take ownership of what you're showing and clearly call it out, so that the audience is very aware of what they're getting into. So I think it's very fair and probably also regularizes the industry a bit. To answer your question, it's definitely not curbing freedom of speech. Yeah. Thank you so much for this awesome and wonderful discussion. Now I'll open the forum for questions. Please ask as many questions as you can. This is the opportunity. Hi, my name is Khalid. I have a question for the platforms and the filmmakers of regional content. What steps are you guys taking to ensure that the regional content travels? For example, if you see the Korean content, it's become global. What steps are you taking to ensure that these content is getting the global eyeballs that it deserves? I truly believe in the regional content because I think it's really hard hitting and I think it's doing an absolute fabulous job. It's really sad that it doesn't get that kind of a recognition. Khalid, hi. So, actually, as a team, we have started doing some cold calls and trying to get in touch with syndication companies and all. To our surprise, when we started doing this, so we came across two regions, or rather countries. One is Russia, which we just got an email 3 weeks back. They were interested in a couple of our shows. They would want them to dub it and then put it across. They think that there are a lot of viewers in Russia who would want to watch content in that in that language coming from India. अब वो बात अलग है कि अभी जो भी चल रहा है वहाँ वो चल रहा है. And then there is this Brazilian company and OTT platform who wants to have our content and have that library there. So there are so many people out there who are looking out for content coming from Asia and Southeast Asia primarily, and India also, because they think there is a lot of content that is coming out and the varied languages that we offer. So the only way is to have an outreach, how to, just to go out there and... Yeah, that's exactly my point, because I travel to the world markets, I travel to MIP TV, MIPCOM, all of those markets. I'm also into syndication and distribution. So the question is that it doesn't get that kind of recognition, especially the regional content. So that's my main problem with the Indian market. तो अपन मिलते हैं अभी. So, here is you already getting a traction. And I think for us, more than individual titles, it's about the platform, right? So the entire focus is how we can distribute Hoichoi to different parts of the world. So far, we are doing a fair job at it. I mean, definitely lots to do in a lot of different markets. But having said that, we are taking a very different route in which we are looking to partner with a lot of telecoms. I think a lot of key partnerships are about to launch, especially in the Middle East and Southeast Asia this particular year for Hoichoi. And that is the main distribution route that we have taken. And we are not really looking to license individual piece of content. Hi, I'm Naman Gupta from Ultra Media and Entertainment. So I guess we Indians love watching ads. Probably that's the reason a lot of OTT players, be it like Z5, and everyone has their own model. Say, Netflix has their own, and everyone, right? But in the US, I think more than 70% people who are the paid subscriber, they are the ones who are actually subscribing more. Say like 2 platforms, 3 platforms, 4 platforms. And in India, the figure is around roughly 2.4, right? The people subscribing to the number of platforms. Considering the regional platform, the data also says that by, say, 2026, more than 50% of OTT content consumption could be in the regional space, right? That's where the opportunity, that's where the untapped market really lies. The question is, the competition, maybe, say 2026, the user habit may increase and the Indians, the same subscriber may subscribe to, say, 4 OTT platforms. But can the regional OTT platform compete for that top 4 subscription, for the user or not? And number 2, I just want to ask each one of you, what would be your preferable sort of monetization model? Is it like SVOD or AVOD or a hybrid?
anyone which you guys are, totally bullish upon. So yeah. I think hybrid is the way forward right now. That is what it looks like. Yeah, the only thing is, depending on the content quality of content that you have, you can have, majority of SVOD or AVOD. That's what, but it's going to be the hybrid model. I think from day one, we have been very clear that we were not into the ads business, and we wanted to provide very premium content for which the users would pay. And fortunately, we have been able to build an ecosystem so far. And even going forward, I think the thought process is very clear that we want to focus on the subscription business and grow it even further. आपका जो क्वेश्चन है वो रीजनल कंटेंट को लेकर के है कि रीजनल कंटेंट का मोनेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है? Correct. So my question is for the regional platform only. Why? Because the global giants and the global platforms also providing a regional, some sort of like some part of content as regional, like say Z5 or Shimaru Me, even that, right? So they may also increase their spending in producing the regional content. So how can like particular regional content actually looking at the monetization model? रीजनल कंटेंट का जो जैसे अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ले रहे हैं कंटेंट, जैसा आपने बताया कुछ बड़े OTTs हैं, साउथ इंडियन मूवीज़ को ज़्यादा ले करके अपने प्लेटफॉर्म पे डालते हैं और उससे वो ज़्यादा इजीली उसको मोनेटाइज कर रहे हैं. अगर मैं बात करूं गुजराती कंटेंट की, अगर मैं बात करूं पंजाबी कंटेंट की, अगर मैं बात करूं हरियाणवी कंटेंट की, अगर मैं बात करूं भोजपुरी कंटेंट की और एज वेल, तो वो जो कंटेंट है वो कंटेंट आपके उसी पर्टिकुलर एरिया में ही रहता है क्योंकि वहाँ की उतनी ही जनता उसको देखना चाहती है. और ज़्यादातर टियर 3 और टियर 4 के लोग जो लोकल रीजनल लैंग्वेज होती है वो ज़्यादा उस भाषा में उसको सुनना देखना पसंद करते हैं. अब बात आती है कि उस कंटेंट को देखने के लिए जैसा आपने बताया मोनेटाइज, तो जो मैंने अभी तक प्रिडिक्ट किया है कि अभी बिजली फ्री मिलने लग गई है, धीरे धीरे क्या क्या फ्री मिलेगा, तो आने वाले टाइम में हम सब जितने लोग बैठे हैं OTT वाले वो सबको फ्री देना पड़ेगा. ये आप लोग मान के चलिए, जिसने पैसा मांगा वो मार्केट से बाहर गया. तो जितने भी SWOT पे काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी बेल्ट का कर रहे हो चाहे वो रीजनल का कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे सबको AWOT पे आना ही पड़ेगा. हाँ, कुछ लोग हैं जो अपनी अंगूठी को दिखाने के लिए घर जलाते हैं कि भैया देखो मेरी हीरे की अंगूठी है, देखो, तो वो लोग कर सकते हैं क्योंकि वो बड़े प्लेयर्स हैं और उनके इंडिया के बाहर से पैसा आ रहा है जो इंडिया में कन्वर्ट होकर के मनी में काफ़ी पैसा बनता है, वो कर सकते हैं. बट जितने भी इंडियन लोग हैं और जो हम इंडियन OTT प्लेटफॉर्म ओनर्स हैं या जो उसको बना यहाँ पर जिनका जो इंडियन लोग हैं उनको फ्री आगे AWOT मॉडल पे जाना ही पड़ेगा, चाहे वो रीजनल हो और चाहे वो. Thank you, Vibhu, sir, for this answer. We'll take any last question if we have. Hello. Good evening, everybody. I actually don't have a question, but I wanted to thank you, Vibhu, sir. I wanted to thank you personally also right now, but I thought I would rather speak in public. My name is Neetu Saini. I'm a songwriter, lyricist, and I want to thank you from the bottom of my heart for Tandoor web series. That this was a wonderful thought that you thought of the shift in the content and you brought Tandoor on ULLU, because I've written a song for Tandoor, Tujbin song, Tujbin ji hu tu ji ho kaise. Thank you so much. Thank you. And as an audience also, I must say that Tandoor was received so beautifully and this shift was welcomed all over wherever it was seen. So I must thank you so much, and also congratulations for this wonderful noble thought of shifting this Thank you so much. content. Thank you. And also to Nivedita Basu madam who Thank you, brought thank this up. That Thank was you a- so much. That was a sweet moment, guys. Thank you so much for participation, and thank you. I team, think for- that Any one I more want question? to- Okay. Yes. One last question we can have. Chandrakant Barvai, retired Doordarshan director. I have got one film proposal, means I have got number of film proposals, but particularly one which has inbuilt scope for promoting tourism. And here now
OTT platforms, advertisers, and content all have to go hand in hand. Should I approach OTT people with this proposal, or go to some tour operator, come on and go to OTT proposal, or should I go to film producer, oh, hello, this is my film proposal. You please advise, you all three. मैं बोलूं? बोलिए सर, द प्लेटफॉर्म आपका है, आप सौम्य जिसको बोलना है प्लीज। सर, इसमें आपको जो है, जो सूचना निदेशालय होता है स्टेट का, जिसे वहाँ पर हर स्टेट में होता है, वो आपको उनको संपर्क करें, और वहाँ पर जब आप संपर्क करेंगे, क्योंकि अभी तक OTT को कोई भी डिस्काउंट या रिबेट नहीं मिलता। हम सभी लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वो मुंबई के बाहर जाके ही शूट कर रहे हैं। मेरी कितनी शूट कश्मीर में चल रही है आज भी, राजस्थान में चल रही है, यूपी में चल रही है, कैलकाटा में चल रही है, MP में चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है, हम लोग क्यों बाहर जाते हैं? एक्सटीरियर शो करने के लिए। आपने जो टूरिज्म की बात कही है, बट हमने कई बार ट्राई किया, मैं यूपी से हूँ, मैंने यूपी में भी ट्राई किया, बट OTT को अभी वो माइलेज, वो प्रिविलेज नहीं दी जा रही है जो थिएटर्स को और टीवी को दी जा रही है। तो उसमें जो एक सब्सिडी मिलती है, जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो सब्सिडी वहीं से ही पास होगी, वो मिनिस्ट्री लेवल पे ही हो सकती है। कई स्टेट, जैसे झारखंड दे रहा है, उत्तर प्रदेश दे रहा है, कश्मीर दे रहा है, लेकिन ये सब फिल्मों को दे रहे हैं जो थिएटर रिलीज होती हैं। और वो कहते हैं जब फिल्म बनेगी तो वो थिएटर पे, इतने थिएटर्स पे रिलीज होनी चाहिए। अभी जो थिएटर वर्सेस OTT की बात छेड़ी गई है, OTT ज़्यादा देखा जाता है बनस्पत थिएटर्स के। अगर कोई एक फिल्म को आप थिएटर पे लगा देंगे, वही फिल्म आप 2 महीने बाद अगर OTT पे डालेंगे तो उसके नंबर्स ज़्यादा होंगे, और जितने नंबर्स ज़्यादा होंगे, इसका मतलब टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो इसके लिए जो लोकल मिनिस्ट्री है, उसको जो सूचना निदेशालय जिसे कहते हैं आप लोग, हम लोग, तो वहाँ पर आपको कह करके ये प्रपोजल जो है, वो वहाँ का जो डायरेक्टर होता है, वो एक ये कैबिनेट डिसीजन है, वो जब मिलेगा कि अपने टूरिज्म को, क्योंकि ये जो भी सब्सिडी दे रहे हैं, ये सब टूरिज्म और टैक्सेशन को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, तभी सब्सिडी देते हैं वो। तो उसके लिए वहीं पे लोकल, अगर आप कहें, हम लोग तहे दिल से आपके बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अगर ये रूल पास हो जाए, क्योंकि झारखंड में ये हुआ है, बट मेरे को आज तक नहीं सुनाई दिया है कि किसी को सब्सिडी का पैसा मिला है वापस। Thank you so much, guys. It was a lovely discussion, and I hope a lot of enlightenment for all of us. And we look forward to, both technology grows, content grows, and OTT ki balle balle. Very nice. Thank you very much. Thank you. Absolutely, OTT की तो बल्ले बल्ले होनी ही चाहिए, and I extend my thanks to all our esteemed panelists for sharing their perspective to all our attendees in such a good way, wonderfully.